ऐसी क्रीम जिसे लगाते ही विद इन 10 मिनट्स आपका चेहरा 6 mm पतला दिखता है। इज इट ट्रू? इज इट फॉल्स? वेल, दिस इज नॉट अ क्लिक बेट, तो वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देती हूँ दैट इज ट्रू। बट डज इट रियली वर्क ओवरऑल? क्या इससे सच में एंटी एजिंग इम्पैक्ट होता है, यस या नहीं? जानने के लिए और कौन सी है ये मैजिकल क्रीम, ये भी जानने के लिए यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो राइट टू द एंड, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द टॉप 10 एंटी-एजिंग क्रीम्स इन इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। Today's video we're diving into the top 10 anti-aging creams in India. Done a lot of research, there are lots and lots of creams available. स्पेसिफिकली उन क्रीम्स के बारे में बात करेंगे जो आपके बाकी के पूरे स्किन केयर रूटीन को कॉम्प्लीमेंट करती है। यानी ये ऐसी क्रीम्स हैं जो आप अपने AHAs, BHAs, रेटिनॉल्स, पेप्टाइड्स सबके साथ लगा सकते हैं। They give you that little extra boost. Some of them are affordable, some of them are a little expensive, but in general, nothing is going over 2000 rupees. But वीडियो शुरू करने से पहले you know the drill. वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बनाती हूँ साइंस बैक्ड डेली कंटेंट here on Skincare Simplified, the only channel on planet Earth जहां आपको मिलते हैं detailed skincare routine. So whether you're struggling with melasma, hyperpigmentation, anti-aging, whatever be your concern, there is a dedicated playlist you can refer to. And now let's not waste time and get straight into the video, because I have to tell you about this 6 mm reducing cream. अगर तो आपने पिछले हफ्ते की वीडियो देखी थी, दैट वाज बेस्ड ऑन द टॉप 10 ceramide creams on a budget in India. We basically focused on one ingredient, which is ceramides. Now, ceramides are fabulous, not just for anti-aging, but otherwise as well, because it is a skin building ingredient. Skin barrier को protect करता है, heal करता है, आगे damage होने से protect करता है. So it has fabulous qualities, and in general, ceramides हर चीज के साथ जाते हैं. But today's video is focusing on anti-aging creams, जिनमें ceramides तो हैं ही, but उसके साथ साथ और भी ingredients हैं, and we're going to talk about कैसे ये आपके स्किन केयर रूटीन में किस तरह से उसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। एंड सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विद अफोर्डेबल ऑप्शन। सो द फर्स्ट अफोर्डेबल ऑप्शन दैट आई हैव फॉर यू, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी दिस फॉर्मूला विद दिस इंग्रेडिएंट, इज बाय द ब्रांड प्लम। ये है प्लम का 1% रेस्वेट्रॉल प्लस विटामिन सी नाइट मॉइस्चराइजर। कंसिस्टेंसी टेक्सचर की बात करी जाए तो ना ये वाटर जेल है, ना ये थिक क्रीम है। दिस इज लाइक अ थिक मॉइस्चराइजर। इट विल वर्क फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इंक्लूडिंग नॉर्मल, ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स. Not recommended that much for oily skin types. Now, because this has resveratrol, जो extract है अंगूर का यानी grapes का, it has a beautiful anti-aging property to it. अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी, how do you make your retinol 2x more powerful, especially if you're in your 20s and early 30s, मैंने बात करी थी how you can layer your retinol with a resveratrol serum. Now, ये रेस्वेट्रॉल जो ऑर्डिनरी का रेस्वेट्रॉल है, उतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन में रेस्वेट्रॉल इसमें नहीं है, बट दिस हैज 1% which is great to add on as a moisturizer. Even though this has vitamin C, it is less than 1% concentration, and therefore ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा आपके रेटिनॉल के साथ, AHA, BHA, पेप्टाइड्स, किसी भी चीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा. दिस बिकम्स एन एंटी एजिंग क्रीम जो आप अपने हर रूटीन में लगा सकते हैं, डेली लगा सकते हैं, as long as it matches your skin type, which is normal to dry to combination. And I think that this formula is going to really take your anti-aging game to a little higher level, because आपको अपने moisturizer में भी truly anti-aging benefits मिल रहे हैं. And that is really, really important to see, guys, because हर moisturizer can be an anti-aging moisturizer. ग्लिसरीन, स्क्वालिन, बेसलाइन इंग्रेडिएंट्स तो हर मॉइस्चराइजर में सेम होते हैं. आजकल तो सिचुएशन ऐसी हो गई है दैट नायासिनामाइड इज इन एवरी इंग्रेडिएंट. इन फैक्ट आई वाज टॉकिंग टू समवन द अदर डे एंड आई सेड द नेक्स्ट थिंग वी विल सी इज नायासिनामाइड इन कॉर्नफ्लेक्स, कि खाओ एंड ग्लो करो. Niacinamide is literally in everything. So I don't really consider it as a pure anti-aging ingredient. When I'm giving you anti-aging creams, I'm looking for a little extra advantage, which is what you get on a budget for just 59 rupees from the Plum 1% resveratrol plus vitamin C cream. Next on the list is another affordable option, and ये मैंने actually try किया था last year when I had bought like a whole bunch of Indian skincare, and that is by the brand Pilgrim, and this is the Squalene Glow Moisturizer. इसमें niacinamide है ही, but also vitamin C. But again, both niacinamide and vitamin C are in less than 1% concentration.
गिवन दैट फैक्ट, ये आपके स्किन केयर रूटीन, आपके एक्टिव्स, रेटिनॉल के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा. इफ यूर ऑन एन रूटीन विच इज टारगेटिंग मेलास्मा, पिगमेंटेशन एंड नायासिनामाइड एंड विटामिन सी ऑलरेडी आपके रूटीन में है, then adding something like this for just 550 rupees will give you a little extra boost. टेक्सचर की बात करी जाए, अगेन क्रीमी मॉइस्चराइजिंग टेक्सचर है. Now that we are entering into the winter season, whatever be your skin type, using a moisturizer is going to be helpful. Night time में तो हम use करते ही हैं. A thicker moisturizer or a thick layer of your moisturizer is going to be helpful as we are entering the winter season. तो ये था मेरा recommendation number 2 या recommendation number 2 from Pilgrim, the Squalene Glow Moisture. Now let's talk about recommendation number 3, and this is not under 1000. This is not 500 rupees. This is actually 2000 rupees when it's on sale. It is by the brand Faces Shop. Korean product hai. Yes, it's a little expensive, and this is the Korean collagen pomegranate lifting cream. Now the ingredient, when I see collagen, I'm like, really, you've put collagen, करता तो कुछ है नहीं, because your body makes collagen. Collagen आप अपने skin को topically नहीं दे सकते unless it is a form of hydrolyzed collagen जो आपके skin पे सिर्फ hydration का काम करता है. But this is not a basic moisturizer. इसमें है pomegranate extract. Now they've obviously said it's some very expensive pomegranate, some very expensive अनार, but basically अनार का extract है. अनार क्या है? अनार is an antioxidant. It is basically a lightening, brightening agent. It also helps with oxidative stress. So this is a cream that I highly recommend for everyone who is on a hyperpigmentation melasma routine, क्योंकि ये आपके current routine को, whether you're using alpha-arbutin niacinamide, azelaic acid niacinamide, whether you're using D-melon, kojic acid, whatever else you're using, उसे ये बहुत beautifully complement करेगा. Hydrolyzed collagen keeps your skin very well हाइड्रेटेड, एंड ये बहुत ज़रूरी होता है स्पेसिफिकली जब हम रूटीन्स में होते हैं जहां हम बहुत ज़्यादा let's say we are using products जो inherently drying हैं, जिनसे स्किन में डिहाइड्रेशन होती है, तो अपने स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करना और एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देना और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है. अदरवाइज स्किन फिर थोड़ी सी डल लगने लग जाती है डिस्पाइट यूजिंग ऑल द राइट स्किन केयर. सो दिस इज माई रिकमेंडेशन नंबर 3. अभी इट इज़ फॉर अबाउट 2000 रुपीज़. नो, अभी एज इन कुछ टाइम पहले जब स्क्रीनशॉट लिया था इट वॉज एट लाइक 2000 रुपीज़, बट आई बिलीव नायका पे एक मैसिव सी सेल चल रही है दिवाली की. सो इफ यू गेट इट ऑन अ डील, मेक यूज ऑफ इट. This is very beautiful. This is my recommendation number 3. Recommendation number 4 is थोड़ा सा और affordable, is by a brand that I love so much, and is by a brand जिसका एक product 90% लोगों के पास है, जितने लोग मुझे follow करते हैं, and that is Cosrx. Every person I speak to, or every time you put your routines in the comment section, मैं देखती हूँ कि Cosrx Snail Mucin Essence like literally everyone has purchased. So इसी brand का moisturizer, the Cosrx Hyaluronic Acid Intensive Cream. This is for 1650 rupees. सेल पे ये था कुछ 1485 का. बिगर सेल, बिगर डिस्काउंट देख लेना. But this is a hydrating cream. Highly recommended for the winter season. Highly recommended for all of you जिनकी स्किन वैसे भी ड्राई रहती है. ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन टाइप है. You basically are using retinol, you're using all your actives, peptides यूज कर रहे हो, and now you want just to make sure कि आपकी स्किन पे वो एक अंदर वाला ग्लो आए. यूज दिस. इन फैक्ट लेयरिंग में स्नेल म्यूसिन के साथ इसे ऐड करें. you're gonna see some great results. Creamy texture है, not that much of a gel texture, and that is why I recommend this for dry dehydrated skin. Formula is lightweight, so you can use it morning and evening. And जैसे कि मैंने कहा कि अब सर्दियां आ रही हैं, so you may want to use a thick layer of this to make sure your skin barrier is always protected. And another fabulous cream and another fabulous ingredient जिसकी मैं बहुत बड़ी fan हूँ, जो आप जानते हैं, that is honey or propolis extract, and Cosrx का ही आपको मिल जाता है Cosrx Fit Propolis Light Cream. Now you get about 65 ml, जो actually normal 50 ml से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, but 15 ml more. The retail price is 2200 rupees. सेल पे ये है 2061 रुपीज का. ज्यादा बड़ी सेल होगी तो बेटर डील होगा. दिस इज फैबुलस. आई गेट दिस हियर एज वेल इन दुबई. आई हैव ट्राइड दिस आउट. दिस इज अ लाइट मॉइस्चराइजर. इट्स लाइक अ whipped jelly moisturizer. It's literally like applying a little whipped cream on your face. Beautiful texture. The honey hydrates your skin. And यहाँ मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, particularly if you're looking at this particular cream, किसे यूज करना चाहिए? जिनकी स्किन पे ड्राइनेस की वजह से पीलिंग हो जाती है.
पीलिंग का मतलब आपको व्हाइट पैचेस दिखते हैं, लगता है कि स्किन उतर रही है, योर स्किन बैरियर नीड्स टू बी बिल्ट कॉन्स्टेंटली, दिस वन इज फॉर यू. दिस इज अ गॉर्जियस गॉर्जियस प्रोडक्ट. हनी हनी जो इंग्रेडिएंट है, इंट्रिंसिकली उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. Honey is a has healing properties. It is an antioxidant. It also helps and soothes your skin barrier. And for 2000 rupees, 65 ml, that's going to last you at least 5 to 6 months. I think this one is a pretty good deal. So if you're interested, you should pick this up. Dry, dehydrated skin, and specifically जिनकी skin sensitive है, जिन्हें peeling हो जाती है, this one baby is going to be for you. अभी तक के प्रोडक्ट्स इन जनरल हैव बीन अफोर्डेबल एंड हैव बीन फोकस्ड अ लिटिल मोर उनके लिए जिनकी स्किन ड्राई है, बट जो ऑयली स्किन है उनका क्या. एंड दिस इज अ प्रोडक्ट आई शुड हैव मेंशन्ड अ लिटिल बिफोर, बट ये थोड़ा सा मिस हो गया व्हाइल आई वाज स्वाइपिंग थ्रू माय स्क्रीनशॉट्स. दिस इज अ न्यू लॉन्च, मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, बट इंग्रेडिएंट वाइज इट लुक्स सुपर सॉलिड. थोड़ी इसमें मार्केटिंग गिमिक्स हैं जो भी मैं जिसके बारे में मैं बताऊंगी आपको. एंड दैट इज बाय द ब्रांड अर्थ रिदम, द फोटो रिपेयर विटामिन सी प्लस मेट्रिक्सल 3000 मॉइस्चराइजर. लाइट मॉइस्चराइजर है, ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी तो यूज कर सकते हैं, बट यू नीड समथिंग मे बी ऑन टॉप ऑफ इट और समथिंग एल्स एट नाइट, बट इन जनरल इट्स अ सुपर लाइटेड फॉर्मूला. नाउ मेट्रिक्सल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. ओके, सो ये आपके मल्टीपेप्टाइड को रिप्लेस नहीं करेगा, ये आपके मेट्रिक्सल को रिप्लेस नहीं करेगा, ये आपके मल्टीपेप्टाइड और मेट्रिक्सल को एक्स्ट्रा बूस्ट देगा. अब इन्होंने, एंड दिस इज वेयर आई फील लाइक ये थोड़ा सा ना चीटिंग टाइप कर देते हैं. इट्स जस्ट आई डोंट रियली लाइक दिस. 3% विटामिन सी प्लस 1% मेट्रिक्सल. अब 3% विटामिन सी लिखा है यहाँ पे, बट जब इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखती हूँ एंड देन आई सी द पोजिशनिंग ऑफ विटामिन सी, इट सीम्स लाइक इट इज लोअर देन 3%, बट ऑब्वियसली दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग गिवन द वे द इंग्रेडिएंट लिस्ट हैज बीन पुट आउट, एंड अ लॉट ऑफ टाइम दीज ब्रांड्स ठीक से इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं डालते. सो लिखा है पैकेजिंग पे 3% विटामिन सी प्लस 1% मेट्रिक्सल. 1% मेट्रिक्सल बिलीवेबल, 3% विटामिन सी नहीं. आई थिंक इट्स मच लेसर. हैविंग सेड दैट, ये आपके बाकी सेरम्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा. जब हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, वी नीड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 इंग्रेडिएंट्स. 20% विटामिन सी प्लस मल्टीपेप्टाइड कॉन्फ्लिक्ट. Yeah, we are talking of copper peptide plus vitamin C conflict, or we are talking about 0.6% retinol and we are talking about 10% something else conflict, but 1 to 3% पे conflicts नहीं होते. So in general, you can literally use this moisturizer AM and PM with all your routines. This will not conflict, and price wise it is so good. This is 549 rupees on retail, and sale पे I saw it was for 494. So a highly affordable product. There are lots and lots of night cream options that I've given you, at least 4 or 3 which are under or which are in the 500 range, which I think are great. Of course, if you can spend a little more, you want to invest a little more, 1000, 2000, 1600, those are options that also exist. But this one in particular is a moisturizer, and therefore I'm recommending it for all my girlies who have oily skin. So I've given you 3 options which were within the 500 range. I've given you 2 options which were 1500 to 2000. अब बात करते हैं थोड़े high end products की. Little more expensive, actually not a little more expensive, a little bit more expensive, but the formulation is good, the ingredients are really good. And I'm actually going to start with perhaps the most expensive one on the list. And the most expensive one on the list is the Clinique Smart Repair Custom Night Repair Moisturizer. It retails for 7,900 rupees. Yes, it's pricey, but why is it so good? Now, this has a whole bunch of peptides in it, like a whole bunch. इस मॉइस्चराइजर का पहला रिव्यू मैंने किया था लास्ट ईयर, जब मैंने लास्ट ईयर वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव क्रीम्स को ड्यूप किया था, एंड आई हैड एक्चुअली पुट इट एज अ ड्यूप फॉर वन ऑफ दोस 50-60,000 रुपीज क्रीम. दिस ईयर मैंने एक और ड्यूप किया है जिसमें अदर ऑप्शंस आई हैव गिवन यू, बट ये लास्ट ईयर का ड्यूप था, एंड दिस प्रोडक्ट इज रियली गुड. आई एक्चुअली यूज्ड इट फॉर अ बिट. आई देन gave it to my sister because I have like a lot of skincare products to use, and this is a great product which I wanted someone to really use and enjoy. Fabulous. I know it's 8,000 rupees, okay? And I'm not telling you to go spend 8,000 rupees, but I'm trying to tell you is कि अगर आप 8,000 rupees खर्च करना consider कर रहे हो, then this is what you should spend on and not something random. That's what I'm going to tell. But I think this is one of the best formulations by Clinique. You know, Clinique का जो सबसे famous moisturizer है, specifically in India, अगर इंडिया की सेल्स की बात करें, it is the Clinique 72 hour moisture surge. That moisturizer has Indian women's hearts locked in, and it is the only market जहां ये सबसे ज्यादा बिकता है. And it is a good moisturizer, but that is what it is. It is a good
moisturizer. It's not giving you anything additional for your skin. This one right here is so, but like I said, it's a planned purchase. It's not an impulse. But if you're considering spending 8,000 rupees, you can spend it on this one. Now let's move on to the next options. Next few options जो मैं आपको दूंगी, they are all like high-end-ish, if that's even a word. Okay, and this again, since this is a product, this is a creamy formula, so you should be at least normal to dry skin to be using this. If you're oily skin, this one is not going to work for you. I mean, you're not going to like it. Now let's also talk about another product which is crazy expensive, especially अगर आप इसका 50 ml pack लेते हैं, and that is by Estee Lauder. This is the Estee Lauder Revitalizing Supreme. Now this product again, in addition to hyaluronic acid, caffeine, has a couple of peptides and is fabulous. अगर इस moisturizer की बात करे जाए, I prefer this as a moisturizer to the Advanced Night Repair Serum. क्यों? क्योंकि Advanced Night Repair Serum को मैंने ड्यूप किया है in other affordable options. One is from Innisfree, the Innisfree Bifida Ampule, the K-Secret Ampule. बहुत सारे products में मैंने आपको इसके alternatives बताए हैं. But this formula is fabulous. Great for mature skin, great for normal dry to extremely dry skin. Again, ये product इतना thick and creamy है that it is not for you if you have oily skin. But if you have oily skin and you want a high-end option, don't go away because I have an option for you. But this one for 9,600 rupees is only if you have mature skin, super dry skin, super dehydrated skin. ये जो दो ऑप्शंस थे 7,900 and 9,000 something are the two most expensive. अब हम बात करेंगे थोड़ी mid range की, मतलब 9,000 भी नहीं और 1,000 भी नहीं, somewhere in the middle. And somewhere in the middle is the Pharmacy Beauty Honey Halo Ultra Hydrating Facial Moisturizer. This product has been viral for 2 years and for good reason, because this leaves your skin so soft like a baby's bottom, hydrates you like no other. And the beauty of this product is that even though it's a creamy formula, अगर आपकी skin oily है तो भी आप इसे use कर सकते हैं. And price wise also it's not that crazy. Retail price 2,600, on sale 2,300. You get a couple of size options. छोटे sizes भी आते हैं, so you can literally try it out with a smaller size. Option number 1. But अगर आपको इसी का similar मिलता जुलता product use करना है and you don't want to spend the same amount of money, then you can literally use the product that I recommended to you first, which I have lost. It's the Cosrx one, right? The Cosrx Propolis. That is a product that's going to give you a very, very similar effect. And iski price is also similar. So it's not like you're losing, you're saving a lot of money. You're saving like 300 rupees. So now you can choose. Propolis use करना है Cosrx का या आपको Pharmacy का Halo use करना है. Both of them are very similar. And sticking to the theme of honey, because honey, we love honey, I am going to give you another option, and this one can be used by those who have oily skin. और ये है एक honey based option of a moisturizer for oily skin. This is by Wishful. This is the Honey Whip Peptide Moisturizer. Why do I love it? Of course, you've got honey, you've got some ceramides, you've got your peptides, you're getting a little extra boost. You can use it with everything. Even if you have oily skin, this is fabulous. दो sizes आते हैं. It starts at 3,750 rupees. Currently, it's not on sale, but अगर कभी sale पे गया, then you can pick it up during sale. So honey based products में आपके पास तीन ऑप्शन हैं. 2,000 में Cosrx Propolis, 2,300 में Pharmacy, and then you've got 3,000 in 3,000 range का option in the Wishful Honey Whip. But the Wishful Honey Whip is particularly good अगर आपकी skin oily है. First two options are for normal dry or dry skin. Now let's look at another product which actually has the same ingredient जिससे मैंने ये video शुरू करी थी, resveratrol, and that is the Caudalie Resveratrol Lift Firming Night Cream. As expected, इसमें has resveratrol, complements all of your anti-aging complements all of your anti-aging efforts, and this is something that can go on with all of your products. AHAs, BHAs, retinol, peptides, vitamin C, whatever else, you can use it with everything. But price wise, this is 5,200 rupees. सेल पे हो जाता है कुछ 4,700 rupees का. But अगर आपको इसी का beautiful effect लेना है in an affordable manner, then you've got the Plum 1% resveratrol plus vitamin C cream. But this one is also pretty damn good. So if you can, I would recommend that you give it a try. And a moisturizer which is specifically for oily skin and is slightly high-end is by the brand Indeed Labs. Indeed Labs ka Hydroluron
moisture jelly, very similar in look and feel to the Neutrogena Hydro Boost, but it's not like the Neutrogena Hydro Boost. It's a lot more hydrating. इस मॉइस्चराइजर को मैं हाईली रेकमेंड करूंगी गिवन इट्स जेली टेक्सचर दैट आप इसे लगाएं हल्के गीले यानी डैम्प चेहरे पे, because this has high concentration of hyaluronic acid and therefore you should be applying it on damp skin. So अगर आपने retinol भी लगाया है, AHA, BHA कुछ भी लगाया है, wait for about a minute, let it get absorbed into your skin, हल्का सा चेहरे को मिस्ट करें and then apply this moisturizer. You're gonna absolutely love your skin. Retail price is 3020 and ये currently sale पे नहीं है. So this is an option dedicated to oily skin. Now let me just talk about with the video that I started, which actually put me, the cream that I actually started the video with, which put me into a lot of agony. So bhule bhatke, I've been noticing in the comment section, a lot of you guys have been asking me about this cream, the Bio Essence Bio V Lift Black Orchid Fermented Rice Face Lifting Extra Brightening Cream. So खरीद ली मैंने, आप भी खरीद सकते हो. इसकी प्राइस नायका पे रिटेल प्राइस इज 2299 रुपीज यानी 2299 रुपए, और सेल पे ये है 1494 का. मैंने खरीदा था ये Amazon से. नाउ दिस प्रोडक्ट प्रॉमिसेस कि 10 मिनट के बाद आप अपने फेस को मेजर करो और 6 mm तक कम हो जाती है. अब अगर किसी को पता है कि 6 mm कितना होता है, it's like this much. 6 mm is like itna sa, it's like a tiny part of my nail. It's really small, okay? But I feel ये भी क्लेम करना बहुत बड़ी चीज है, because you know this, topical skincare is not magic. So मैंने क्रीम खरीदी. So सबसे पहले बात करते हैं टेक्सचर की. This cream is said to be used by all skin types and I would agree, because it is such a lightweight moisturizer कि आपके स्किन में फटाफट अब्जॉर्ब हो जाता है. अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई है, इसके ऊपर आप एक स्लीपिंग मास्क या कुछ लगा सकते हो, बट ऑयली स्किन के लिए भी ब्रिलियंट है, नॉर्मल स्किन के लिए भी ब्रिलियंट है. बेसिकली ट्रूली ये मॉइस्चराइजर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजन दैट आई वाज सो इंट्रिग्ड. ब्लैक ऑर्किड, यू नो, गर्ला, जिसकी क्रीम्स यूजुअली 25 से 30 हजार रुपए के बीच में होती हैं, उनकी पूरी की पूरी दुनिया है डेडिकेटेड टू ब्लैक ऑर्किड. एंड इफ यू सॉ द वीडियो, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव क्रीम्स ड्यूप्ड, you've seen the whole black orchid drama. So black orchid is like a really expensive ingredient. Obviously इसमें fermented rice है, and ये तो सबको पता है rice is good, and it has like your basic filling ingredients. Now they say that when you apply this lotion in lifting movements, जैसे हम normal moisturizer लगाते हैं, this is going to reduce and tighten your skin by 6 mm. मुझे कुछ 3 दिन लगे, and with the help of my husband, and we were literally measuring my face in all kinds of ways to figure out कि कुछ लिफ्टिंग हुई है. क्योंकि 6 mm तो वाटर रिटेंशन से ही भर जाता है, यू नो, चेहरा. लाइक इट्स नॉट इवन अ रियल थिंग. बट डे 3 पे बहुत सारा मेजरमेंट करके we were successful, and according to me the difference was like 4 mm. According to my husband it was 5 mm. 6 mm तक तो हम पहुंचे नहीं, maybe some other person can reach, but literally guys, इतने बड़े चेहरे पे 6 mm कम हो भी जाएगा तो कहाँ पता चलेगा. Okay, so I wanted to clarify, and kudos to this Bio Essence company, because they've made a claim जो सच में सच हुआ है. Like if it's, मैंने इसको, मेरे को टाइम लगा मेजर करने में, बिकॉज मुझे आया भी नहीं ना कि कैसे मेजर करना है. फर्स्ट वी वर पुटिंग इट हियर, देन वी वर पुटिंग इट हियर, देन वी वाज लाइक किधर से मेजर करें, देन आई वाज लाइक, इट वाज जस्ट कॉम्प्लिकेटेड. ओके, लेट्स जस्ट से दैट it was like being an idiot trying to experiment, but basically I measured it. अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप खरीद के मेजर करना चाहते हो, you have to measure it from here, because ये तो थिकनेस यहाँ से तो आप मेजर कर नहीं सकते. दिस इज अ फ्लैट सर्फेस, so you have to measure it from here and then see कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है. Obviously there is a cooling, toning, kind of a little bit of a cooling sensation. Yes, you do feel a little snatched temporarily. That's it. And I am not against temporary snatchness, because I love the Argoline, I love the Matrixil, and they are also pretty temporarily. So I have now decided, I was using Peter Thomas Roth. I've been using it for like 3-4 weeks. अब मैं उसे एक ब्रेक दे रही हूँ, because now I'm like literally testing this one out. बताना मैं ये चाहती थी कि जो क्लेम है वो सच है. मुझे 4 mm लग रहा है, किसी को 5 mm लग रहा है, किसी को 1 mm लिखेगा, फर्क कोई पड़ना नहीं है. पर इन्होंने झूठ नहीं बोला, which is like a good thing. Okay, so full marks for not lying. But honestly, how does this work? Does it make my skin great? You will know in a couple of weeks.
But this is my option number 10 for you of an anti-aging cream, because I do feel this is anti-aging. The only person who should not be using this is अगर आपको fragrance बिल्कुल पसंद नहीं और अगर आपको वो cooling sensation चेहरे पे पसंद नहीं. If you don't like it, then this is not for you. Otherwise, use it, enjoy it. It's like $1,600, so it's not that crazy expensive. If you enjoyed this video, let me know. And एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ. कभी कभी I've noticed in the comments you guys ask me what lipstick am I wearing, and because I batch shoot my content so much in advance, जब तक वो पोस्ट होता है, आपका कमेंट आता है, मैं पढ़ती हूँ, मुझे याद नहीं होता. सो आज मैं लिटरली लिप कॉम्बो के साथ बैठी हूँ इन केस समबडी इज इंटरेस्टेड. सो सबसे पहले लिप्स पे हमने लगाया था ये एट्यूड हाउस का टिंट जो मुझे फ्री मिला था कहीं पे, डियर डार्लिंग, आई थिंक दिस इज द शेड. एंड इसके ऊपर हमने लगाया है टार्ट का माराकूजा जूसी लिप. It's a gloss. Okay, it's a gloss and this is like a pink color. It's like a pink color. So it's basically this and this. If anyone's interested, this is the lip combo for the day. Video pasand aayi, don't forget to like and subscribe. I will see you tomorrow. Till then, take great care of yourself. Bye.